welcome to my channel. And yes, this is part 2 of Karan Aujla's Peep Pop Culture Listening, album listening. तो आज मैं इस वीडियो में 3 गाने सुनूंगी. ये सारे ऑडियोज़ ही है, इनके वीडियोस आए नहीं हैं. So today I will be listening to him. तो लास्ट टाइम मैंने बॉयफ्रेंड का वीडियो देख लिया था, तो बॉयफ्रेंड तक मैंने सुना था. So today it's gonna be him. उसके बाद For a Reason आता है जो मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी हूँ. So him, I'm gonna do my thing and Peep Pop Culture, which is obviously the title track. तो आज मैं ये 3 गाने सुनूंगी and उसके बाद बचते हैं 4 गाने. So that will be part 3 and the final part where I will listen to I Really Do, जिसका obviously video है. Then You Are Though, Daytona and Flip Side. So yeah, that's how both the videos are gonna go. And yes, let's start with part 2 listening right away. तेरे एक दिल पिछे किन्ने दिल तोड़ते नी ऐश तू करेंगी पिंड 25 किले रोड़ते नी नजरा कमा के नी तू एक बारी तक्किया नी तेरे पिछे गब्बरू ने 26 साग मोड़ते नी वैली हुंदे ने भी नी माड़े एह नजरा क्यों रहन डरियां डरियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां ए भी पा तेरे प्यार दा जरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां नी असी भी नहीं पुछना दोबारे सानू लगदा है मित्रा नु मारेगी कवारे तू नी इत्ते I'm starting again because I am loving this guitar. Starting में भी और फिर वो जब वर्स स्टार्ट होता है उस टाइम भी. Again lyrics जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ. I'm just gonna vibe. ये पूरा एल्बम ना I feel जो मैं listening कर रही हूँ, it's more on the music and the vibe and his vocals basically. So this is not like my reaction is more on the musicality than the lyrics. I would have wanted to react on everything and share my opinion on every aspect of the song, but it's okay. This. तेरे एक दिल पिछे किन्ने दिल तोड़ते नी ऐश तू करेंगी पिंड 25 किले रोड़ते नी नजरा कमा के नी तू एक बारी तक्किया नी तेरे पिछे गब्बरू ने 26 साग मोड़ते नी वैली हुंदे ने भी नी माड़े एह नजरा क्यों रहन डरियां डरियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां ए भी पा तेरे प्यार दा जरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां नी असी भी नहीं पुछना दोबारे सानू लगदा है मित्रा नु मारेगी कवारे तू नी इत्ते साडा दिल खुश हो जू अज लंगूआ गली चों आ जा चढ़िया चवारे तू मैं उदों भी बस छड़ दूं लड़ाइयां जदों तेरियां मेरे नाल सच्ची अखां लड़ियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां ए भी पा तेरे प्यार दा जरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां मैं तेरे पिछे मोड़ियां नी तां भी तेरे रहंदियां ने मत्थे ते ओड़ियां नी इन्ने भी नी ना करे करी दे तैनू भी बाबड़िया ते सानू भी नी थोड़ियां नी तैनू जाने दिलों यार चाहुंदे दिले चित ना लेना एवें तरले जे पाउंदे नी तू अज कहदे हैगा कोई होर मैनू सौं लगे तेरी तैनू कल तों बुलाउंदे नी आने खांदे पट्टियां ने काने ते तू सानू ही सिखावें अड़ियां अड़ियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां पा तेरे प्यार दा जरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां चिड़ियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां नी तैनू दसी जाना पछताएंगी तू मिले ना मिले नी गाने औजले दे गाएंगी नी जेड़ा तेरे खो गया ख्यालां विच साडे जिहा यार कित्थों लभ के ले आएंगी नी लोकां दे तां खिल गए बगीचे साले साडे घोर बेरियां नू बेर कदों होणगे नी ऐतकी तां बनदी नी गल रब सुकर के साडे मेले फेर कदे होणगे नी स्वर्गां च ले लांगे नज़ारे नी मैं सुणिया उत्थे ने परियां परियां नी असी ये तेरे पिछे पिछे आउण मित्रां दे पिछे खरियां खरियां ए भी पा तेरे प्यार दा जरूर है तैनू लगदियां अखां चिड़ियां
guitar is so good in this. The electric guitar. Oh, that was amazing. That was amazing. I love this song. Again, this goes in the playlist. इसका भी वीडियो यार बढ़िया लगेगा अगर आएगा तो. I'm just gonna go back to the video section. What a beautiful song. What a beautiful song. अब obviously lyrics जैसे मैंने कहा कि line by line I can't understand, but I can understand this much कि ये एक love song है. He's professing his love for the lady and वो बोल रहा है असी मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ and all of that. Like I am in love with you and I'm gonna follow you probably wherever you go. Something like that. And he's completely smitten. That's what I got from this, the way he's singing also, and little bit of the words and the lyrics. He's totally smitten by her. Music, I feel Ikki is just on another level with this album because musicality, I think मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट बाहर आके निकला है फॉर दिस पर्टिकुलर एल्बम इसकी हर गाने का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिस तरह से गाना स्टार्ट होके जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं, उनके जो धुन फिर बनी है उसमें किस तरह से मिक्सिंग एंड मास्टरिंग हुआ है, किस तरह से गाना पूरा अरेंज किया गया है. आई थिंक दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट हाईलाइट फॉर मी. And I think Ikki deserves all the love here because it's done so well. The execution of the instrumentals and all these sound effects and all of those things are just so beautiful. Because अगर मैं सिर्फ इसका instrumental सुनूं, इन गानों का अगर मैं सिर्फ instrumental सुनूं, there is probably so much to break down here. क्योंकि इतना बढ़िया से सब कुछ कंपाइल हुआ है, इतना बढ़िया से सब कुछ मिक्स किया गया है that you cannot help but just vibe and appreciate that music because वो इतनी बढ़िया से उभर के आ रहा है. So that's what I feel is my biggest takeaway from this entire album. This has such and I feel कि अब इतने गाने सुनने के बाद जितना भी मैंने अभी तक सुना है is that the album is kind of in मुझे पता नहीं है ये पार्ट A and पार्ट B में आया था कि एक बार में सब रिलीज हो गया था, but the theme of the album now I'm getting is that we see one side of Karan which is like very soft and it's like the lover boy side. The second side of Karan that we see is the Gabru side, basically like the gangster side. So these are like two personalities of Karan that I am seeing from this particular album because मुझे और कोई distinction मिला नहीं है गानों में. Either it is the love song or either it is the gangster flex song. These are the two distinctions that I have got till now. अभी आगे के गानों में अगर मुझे ऐसा कुछ दिखा कि नहीं अब बहुत ही कोई सैड गाना आ गया something like that, but I don't feel that looking at and hearing the vibe of the songs till now that there would be a sad song or something like that. I don't know. So it's either in the love zone or it's either in the gangsta flex kind of zone. So that's what I got. And here just the beginning of the song with the guitar, so beautiful, उसी से ही end होता है and ending में भी एक बहुत ही high note पे इतना बढ़िया end किया है इस गाने को. Love that. With Karan has this really charming lover boy voice when he does these kind of songs, which I love. And ये मैंने last time भी बोला था जब मैंने part 1 का reaction मैंने जब publish किया था, is that Karan's voice is such and his cadence is such that I never feel that he is going out of his way to kind of make a song sound a certain way. It comes naturally to him if he wants to sound like really gangsta, or if he wants to do a motivational song, or he wants to motivate us, who wants to do a lover boy image. Everything comes naturally to him, and that's big credit to the way he actually sings and raps in a way. So love his voice that way. And here also that charm. When you see, you don't have the video होता है तो और भी वो charming हो जाता है because he has a very pleasing personality. But I'm just saying, just from the audio itself, the way he's singing, if you just listen to it, there's a certain sense of charm that you can hear with specifically these kind of songs, right? And that's what वो emotion उभर के आता है. You actually feel it. So that's great. I love this song. Again, great. इसके बाद वाला गाना भी बहुत अच्छा है for a reason. मतलब मैं तो video वाले sequence से जा रही हूँ from bottom to top basically. So I love for a reason as well. In fact, उसका video भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. And yeah, this was him. And उसके बाद the next song that I'm gonna right now listen to is I'ma Do My Thing. I feel ये वो
maybe flex wala gana hai ki I don't care about the world and I'm gonna do my thing. I feel it's in that zone, but let's listen to it. It's like I'm really happy that these all songs are like 3 minutes. Just the biggest complaint I have कि boyfriend भी उतने ही मिनटों का गाना हो जाए. 3-3.5 minute का गाना boyfriend भी हो सकता है. Like this song, Him, it had 2 verses, which I love, which I absolutely love. So why not in Boyfriend? Again, yes, I really love that song. I am biased towards Boyfriend. Let's be very honest. Maybe it's because that's the first song from this album I listened to. I'm just saying. थोड़ा तो मेरे दिमाग में भी bias create हो गया है. तो पहला गाना था तो सबसे ज़्यादा मैंने वही सुना है. Yeah. Anyway, so yeah, now I'm gonna listen to I'm gonna do my thing. Let's go. East Punjab. Yeah, so this again I feel goes into that very gangsta flex kind of zone. So yeah, मुझे और कोई split समझ नहीं आ रहा है. Album का यही theme है. One is his lover boy image and another is his gangster image. And this is what I'm talking about when the song starts. Like these little ad-libs, कहीं से भी कुछ sample किया है, फिर उसमें वो music डाला है, मतलब it takes a lot of thought. That's what makes overall as a song, it just gives you that feeling and that emotion and that vibe. And I think for every song that I have listened to, Ikki that way has just composed, like arranged it basically so freaking well. East Punjab. It's like I'm a do my thing. His cadence is different, you see? Like it's a completely different personality that I'm listening to. ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮੜ ਕਹਿਰ ਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਯਾਰ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਹਿਰ ਕਾਨੇ ਆਜਾ baby do your thing I'ma do my thing watch me ਆਜਾ baby do your thing I'ma do my thing ਨੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨੱਪੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਕੇ ਬੇਉਦੀ ਆਉ ਢੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂ ਬੀਬਾ ਕੋਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪ ਦੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਲੇ ਖੇਡੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਆਉ ਡਿੱਟੋ ਜਮਾ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾ ਤੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋਰ ਹਲੇ ਗੁੱਟਦਾਰ ਕਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜੁੱਟਦਾ ਕੈਪ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਕਾਨੇ ਆਪ ਨੀਵੀਂ ਮਾਤੇ ਵਾਲੇ ਜੀਪਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ 80 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਪਈਆਂ ਈਜ਼ਵੇ ਸਮੇੜ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸਾਲੇ ਨੇਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੱਚੀ ਕੋਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਜੜ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਲਿਖਾ ਗਾਣੇ ਸੋਮਾ ਤੜਕੇ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਰਕਾਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲੇ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂਰੀ ਖੜੇ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣ ਜੱਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਏ ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਡਿਉੜੀ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਡੰਗੀ ਫਿਰਾਂ ਲੈਂਬੋ ਥੱਲੇ ਡੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬੀਆਂ cycle and then Lambo. I'm trying to figure it out. It's every flex song. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਵਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਤਿੰਨ ਕਰਾਂ ਹਸਲਾਂ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕਰੌਕ ਦੀ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਏ ਨਹੀਂ 100 ਦੀਆਂ ਥੱਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਰਕਾਨੇ ਦੇਖੀ ਭੱਜਦੇ ਰਕਾਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਡੀਆਂ ਉਜ਼ੀਆਂ ਟਰੰਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੇਜ ਸੋਹਣੀਏ ਬਰੇਨ ਬਸ ਚਾਲ ਹੀ ਸਲੋਆ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲੋਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਰਾਂ ਬੋਲ ਬੀਬਾ ਕੋਵੀ ਦਾ ਥਰੋਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦਾ ਸਲੈਂਗ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਲੋਆ ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਬੜਾ ਜਮਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰਕਾਨੇ ਆਜਾ baby do your thing I'ma do my thing watch me ਆਜਾ baby do your thing I'ma do my thing See now, like these instrumentals are amazing. East Punjab Oslo Punjabi pop culture runs through the blood. Flowing through the blood. All right. See, this is what I exactly meant.
this is exactly what I meant, where I tell him that he doesn't need to try, and then you feel like he has split personality, man, in the sense that you feel that he's a completely different person when he's singing a completely different genre. कोई, I mean guys, come on, इसमें भी जैसे मैं बोल रही थी ना, it's like a whole new person doing this. अभी him सुना मैंने, can you believe कि ये वही बंदा है? At least I cannot believe. I know कि वही बंदा है, but I'm saying that it's just, the switch is just so effortless that it just doesn't feel like it. And in music wise, this song had a very cool kind of vibe. अगर आप मुझे बता सकते हो कि इसमें actually like क्या बोला जा रहा है, so it'll give me a much better understanding. But I'm gonna do my thing. I mean, the title kind of suggests it that yeah, he has probably it's guesswork. So it probably says that, you know what, I have worked my ass off, so now I've earned the right to kind of do whatever the hell I want with all this fame and money that I've earned, huh? Because मैंने मेहनत की है भाई, ऐसे ही नहीं मिल गया, मेहनत से हुआ है ये सब. So now I'm gonna do my thing. Yes. So now I have much better agency to call the shots basically. पहले शायद नहीं होगा जब मैंने start किया था, but now I have that agency. So maybe that's the gist of this song. But music-wise, I would again say, like, what a great album music-wise. It's just making me so happy that every song that I'm listening to is offering something different in terms of instrumentals, in terms of vibe. It's just a pure vibe for me at this point of time. Here also, it was like very cool. I felt that the entire song was in that cool wala zone, you know, like very chill and cool wala zone, though it's a flex song, but it had those elements as well, for me at least. So and I'm going to move on to the third song for this particular video, the last song for this particular video, which is called as P-Pop Culture. This is the title track. I'm very excited to actually listen to it because पूरा album ही इसी पे based है. So yeah. P-Pop Culture. Icky, like, come on. Ooh. The build up. Oh, this song is actually, the song is reminding me of another song in which basically it's में जैसे P-pop बोला ना, उसमें hip hop वैसा था. It's kind of reminding me of that. The build up, come on. P-pop culture. अभी वो जो beat आता है. Oh wow. No idea what he's saying, but I'm loving it. हवा च चलाਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੂਣ ਭੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਵਹਿਰ ਮੁੱਕ I like how in the rhyme scheme basically, because obviously मुझे lyrics नहीं समझ आते, but the rhyme scheme नहीं होंदा, like I like how it's rhyming that way in the entire song till now basically. ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਏ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੱਟਾ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਦਸਾਂ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
माल खरा ना Okay, this rhyme scheme is quite good. Whatever I'm able to hear. ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਦੇ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਬਦਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਜੋਰ ਕੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜੇ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰ ਉੱਤੋਂ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਔਜਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗੱਲੀ ਹੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਕੀਲਾ ਏ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ Oh, wow. Oh my God, this is exciting. This is a concert song. This song. Okay, this music is... the guitarist man who has done this. This is a concert song. It's made for the concert. Tell me, it's so... This song video should be just a compilation of his concert videos, I feel. Come on. This is a suggestion to the director, like jo bhi inki creative team hai. It's a suggestion. Like release a video for this. Wait, let me just stop this first. So I was saying release a video for this, like an official video, and just compile all of his like best concert moments. Put it here. Yeah. Oh my God, just... What do I even say? Musically, this is such a good song. Such a good song. The way it starts and like you can all, it's like a pulse. Like I'm just gonna say it musically. I'm just saying like a pulse, and then the beat drop happens, and then you have the beep pop beep pop. It's like, you know, the crowd singing. So you feel that you are transported in a concert. बिल्कुल यही मेरे को फील आई. और उसके बाद जिस तरह से वो म्यूजिक को हाइप बिल्ड करता है, देन उसके ऊपर आपकी करण की वॉइस आती है in that high note. He's singing in that high note. And I love कि इस गाने में जो rhyme scheme जैसे use किए, it's very kind of simple, but it works. Like as a listener, I'm saying कि even though मुझे language barrier है यहाँ पे सुनने में, because he has used that kind of rhyme scheme, it's sounding so good. It is sounding so good. It's sounding like to the point. To the point. Yes, he's hyping. In the song, I just felt like hyped up, even though I did not know the meaning. So it's because of the way like his cadence was, because I love when he does that high note singing. It's really, really nice. Specifically for songs like this, जब उनका वो high note वाला singing आता है, it's amazing. It's just so perfect. Like it's a perfect blend with the music. And music तो बिल्कुल चार चांद लगा दिए इस गाने में. वो ending वाला, the way this song ends, worthy of being the title track, guys. Worthy of being the title track. I was totally transported in a concert-like situation in this. Wow, what a great album. What a great album. Really. And I'm not even surprised, like, the kind of views each song has garnered. Like, just being the audio. Just it being the audio. Like, look at each song. Like, each song kind of got its fair share of listen. And I'm really, really happy. In fact, मैं तो देख रही हूँ, अभी जब मैं next ये करूँगी, reaction दूँगी, I really do a Daytona has like, in fact, Daytona का अभी हाल फिलहाल में एक remix version निकला है. So these two songs are really like good apparently, because बहुत सुना है. अब मुझे आप बता देना आप लोग. But overall अब तक for this, or like all the three songs that I've listened to, I loved it. Musically, each one of them was really good. I think सबसे superior मुझे the way arrangement was and the way it kind of transports you into the another world. I think P-pop culture stands out this time for me. But overall as a song, क्योंकि मेरा obviously अगर मुझे कोई गाना loop type करना है तो definitely इन तीनों में से I would loop him, because that's more my taste. And this is the side of Karan I love the most.
when he does the romantic lover boy stuff. I really love it because वो उनका जो soft voice है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So him is something that like out of the 3 songs that I listen to that I would loop a lot. But musically and arrangement wise, I think P-pop culture completely stood out for me right now. Amazing. Brilliantly done. And yes, that was part 2. These were the 3 songs for today's video. Please आप अपने विचार, thoughts, please comments में share करिए. And yeah, I'm gonna sign off now. Hope you guys enjoyed watching this part as well. If you have come here for the first time and if not watched the part 1, please do head. And yeah, I'm gonna sign off now and I will see you soon on my next video. Bye.